Assalamu alaikum everyone. Today we will be making our front bodice draft. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि आपने इस सफ़े के ऊपर जितने ब्लैंक्स हैं वहाँ पे आपने अपनी तमाम सेंटीमीटर्स की वैल्यू को मेंशन कर लेना है. दैट इज़ द साइज़ 10. Once you have mentioned all the values over here on this page as well as on the second page, then you are supposed to move on to make your pattern. Today we will be drafting our pattern. Pattern start करने से पहले मैं आपको बता दूं, you need a graph sheet, ठीक है? You need your Japanese scale and you need your French curve. इसके अलावा आपको आपकी pencils required हैं, an eraser and a sharpener. So these are the tools that you will be needing to make your draft. So let's put these scales aside. Alright, this is a graph sheet और ये सेंटीमीटर वाली ग्राफ शीट है. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली इसको हाफ फोल्ड किया हुआ है बिकॉज हमें अपना पैटर्न जो है वो इसी साइड पे ही बनाना है. सो इस साइड के ऊपर हम लोग अपना बैक का पैटर्न बनाएंगे. सो लेट मी पुट इट बैक अगेन लाइक दिस. बिफोर आई कैन स्टार्ट लेट मी टेल यू समथिंग कि इसके अंदर जो आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल बॉक्सेस, ये एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है. तो आपने इनिशियली करना क्या है, अपना पैटर्न बनाने से पहले आपने फ्रॉम दिस कॉर्नर, फ्रॉम दिस टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर, यहाँ से आपने एक ब्लॉक को छोड़ना है एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट और आपका ये पॉइंट जो है ए कहलाता है. ठीक है जी, बिकॉज आपका पैटर्न जो है वो फ्रॉम द राइट साइड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में आपका पैटर्न ड्राफ्ट होगा. सो दिस इज योर ए पॉइंट. जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफ शीट जो है ये आपने तो इसको ग्राफ शीट पे ही बनाना है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ शीट आपको शायद मेरी पेंसिल्स की लाइन देखने में प्रॉब्लम होगी. तो मैं करूंगा ये कि rather than making the pattern on the front side of the graph sheet, I will be making it on the back side of the graph sheet, जो ये पूरा plain white है, ताकि आपको देखने में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो. Alright, what I'm going to do is I'm gonna roughly जो है मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस ऊपर से भी छोड़ूंगा and from this side as well. And I will mark this point as my starting point, that is A point. ठीक है जी. Now you know that आपने क्या करना है, अपने साथ अपने नोट्स ओपन करने हैं. ठीक है, नोट्स ओपन करके आपने जो फ्रंट पैटर्न बनाने का, जो फ्रंट बॉडी ड्राफ्ट बनाने का जो प्रोसेस लिखा हुआ है, फिगर नंबर 1 को आपने नोट करना है. फिगर नंबर 1 के अंदर आपका पहला स्टेप है दैट सेज A to B. Now A to B is equals to फुल लेंथ, और जो फुल लेंथ आपकी बनती है दैट इज 45.1 सेंटीमीटर. आपने करना ये है कि यू विल कीप योर स्केल लाइक दिस एंड यू विल मेक योर 45.1 सेंटीमीटर की आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. So I have a starting point over here, that is my A point, and then I have the other point, that is my B point. The distance from this point till this point is 45.1 centimeter. I'm just going to write it over here. बाकी values मैं यहाँ पे mention नहीं करूँगा. This is 45.1 centimeters. Once I'm going to be starting off with the pattern. अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपको कह रहा है A to C is across shoulder less 1/8 of an inch and that value is 19.4 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर आप गौर करें फिगर के अंदर तो आपको एक निशान जो है यहाँ पे ऐसा L शेप का निशान, उल्टा L शेप का निशान देखने को मिलेगा. ये जो आपको इस किस्म का जो निशान है, आप जहाँ पे भी अपने पैटर्न्स के अंदर देखेंगे ड्राइंग या फिगर के अंदर,
तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पॉइंट के ऊपर परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल लेते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। एंड I have explained you how you're supposed to make a 90 degree angle. Now A to B जो है ये बेसिकली आपकी रेफरेंस लाइन है और आपने रेफरेंस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। Now A to C का जो फासला है that is 19.4 centimeters. So what you're going to do is you will make a 19.4 mark over here and it's right over here, stopping over here. ठीक है जी। Now this point is your C point. इसी तरीके से वो आपको बोल रहा है कि C से आपने 90 डिग्री का एंगल लेते हुए नीचे की डायरेक्शन में आना है एंड दैट वैल्यू इज 7.6 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट rather than you make a 7.6 mark, आप 90 डिग्री का एंगल लेके एक रफली लाइन ड्रॉ कर लें and then you can make your 7.6 centimeter of mark over here. तो ये आपके पास यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर का निशान आ गया। नाउ इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज B to D. नाउ दिस इज B एंड D इज सम प्लेस ओवर हेयर और इसकी वैल्यू है 37.1 centimeter. So I'm keeping it like this, and from this point all the way till this point, that is B to D is 37.1 centimeters. ठीक है जी। इसी तरीके से D पॉइंट पे जो है वो आपको कह रहा है कि इस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल लेते हुए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10.2 सेंटीमीटर्स। इस पॉइंट का भी किसी किस्म का कोई नाम नहीं है। Our next step is B to E. Now this is B and we are supposed to make an E line over here. Yet again you can see a mark like this over here that represents a 90 degree angle. तो आपने यहाँ पे पहले 90 डिग्री का एंगल ले लेना है स्केल की किसी भी इस लाइन को रेफरेंस लाइन के साथ मैच करते हुए। यू विल ड्रॉ योर लाइन लाइक दिस। सो वंस यू हैव मेड दिस लाइन, इसको आप मेजर कर लें कि ये कितनी है। B to E दैट इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर्स। दिस पॉइंट इज योर E पॉइंट। यहां से अपवर्ड्स वो आपको कह रहा है कि स्क्वायर अप फ्रॉम द E पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू 27.9. Yet again you are supposed to take a 90 degree angle over here. So we have our mark over here. इस पॉइंट का भी कोई नाम नहीं है। So we have 3 points जिनका कोई नाम नहीं है। One is this, one is this, one is this. So these are the 3 points that have not been labeled because these are our reference lines. Next step, B to G. B to G is shoulder slope and the value is 45.4 centimeters. So you are to draw a line from here that will actually touch onto this line. जहां पे भी आपकी ये 45.4 सेंटीमीटर जहां पे आके यहाँ पे टच करेगा, that is where you are supposed to draw this diagonal line. Now from this point all the way over here you will get your B to G. This is your B point and this point that you see over here is your G point. Next step is G to H, bust depth, that is 24.1 centimeters. Now G is over here and H point is coming somewhere over here. So the value from G
to H is 24.1 centimeters. So this is 24.1 centimeter coming over here. Now this point is your H point. Next step, G to I. Now G is over here and I is supposed to come somewhere over here. The value is 13.3 centimeters. Like this. Now this is G and over here we have our I point. Now he's asking you to make another 90-degree angle over here, and this line is supposed to touches this D line, just like this. So this line is intersecting with our reference line onto D line. Next step, J to K line. Now we have our J point somewhere over here. How will you identify that J point? Is that you're supposed to take a 90-degree angle in reference with this H point, and this line will be your reference line. So what you're going to do is make a 90-degree angle line just like this, and this point is your J point, and the distance from J all the way till K is 10.4 cm. So this is 10.4 centimeter coming right over here, and this point is K point. Next is D to L. Now D to L is 1/2 of D and J. So what you're going to do is आपने करना ये है कि आपने D और J का सेंटर लेना है, और जो सेंटर पॉइंट आएगा आपने वहां पे निशान लगा देना है, right over here. This point is L. Next step is you're supposed to make a perpendicular line, that is the 90-degree angle L all the way M over here. L to M value is 17.7 centimeters. So first you can make your 90-degree angle like this. Now you know that you're supposed to make a 17.7 centimeter line over here. So it is coming like this. This is our 17.7 centimeter from L all the way till M. And the next thing is he's asking you to make a reference line, again taking a 90-degree angle like this from M going upwards and a bit downwards. ये वाली line जो है ये आप roughly इतनी खींच दें, like 3.5 centimeter above and 3.5 centimeter below, because this is just a reference line. Next, B to F. Now this is your B point and F is supposed to come somewhere over here, and the value from B to F, that is your dart placement, is equals to 8.3 centimeters. So what you're going to do is you will point 8.3 over here, and this point is not supposed to be given any name because it says in the next phase of this step 3/16 of an inch downwards, that is equals to 0.5 centimeter. तो पहले आपने B से इस तरफ 8.3 सेंटीमीटर आना है और फिर इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए 0.5 cm नीचे जाना है, like this. Now this point, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, इस पॉइंट से नीचे आपने लाजमी लेना है. This point that you see over here is your F point. Let's move on to figure number 3. Figure number 3 में पहला point है आपका I and N is supposed to be coming somewhere over here. This is your new strap measurement और ये value आपने I2 इस line के ऊपर लेनी है, that is going to be your N point.
the value of new strap measurement is 45.1 centimeters. This is I, and this point is your N point. The distance from I to N is 45.1 centimeters. Next step, N to O. This is your N point, and O is supposed to be coming somewhere over here. That is your side length, and the value is 21.3 centimeters. This point over here is your O point. This is N, this is O. N to P. Now over here he is asking you to take a 90-degree angle. Reference line आपने ये लेनी है, and you are supposed to make a line onto here, that is 3.2 centimeters. First you can make a 90-degree angle over here, and then 3.2 centimeter की आपने यहाँ पे निशान लगाना है, right over here. So this point that you see over here is your P point. यहाँ पे आपके लिखा हुआ है पर्सनल फिट सी फॉर्मूला, इस पार्ट को आप छोड़ दें. मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. O to P. O to P is equals to side length. Line is directed to P and ends when equals to N to O. Draw line from P to F. Now what you're supposed to do is कि वो आपको कह रहा है कि जितना आपका O और N का फासला है, that is 21.3 approximately, तो आपने यहाँ पे भी 21.3 की ही लाइन ड्रॉ करनी है, like this. So this new point is your O point now. इसी तरीके से वो आपको कह रहा है कि P और F को एक स्ट्रेट लाइन से आपने मिला देना है. This is P and this is F, like this. This is P and this is F. P to Q, waist arc plus 1/4 inch is less B to F. यहाँ पे आपने करना ये है कि वेस्ट आर्क की जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज 17.8, प्लस आपको कह रहा है 1/4 इंच यानी कि ब्रीदिंग स्पेस आपने रखनी है, और आपने 0.6 इसमें ऐड किया तो आपके पास 18.4 की वैल्यू आ गई. फिर वो साथ ही साथ आपको कह रहा है कि लेस बी टू एफ. नाउ बी टू एफ की जो आपकी वैल्यू आ रही है, दिस इज बी एंड दिस इज एफ, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8.3 सेंटीमीटर रफली. नाउ 8.3 जो है आपने 18.4 में से माइनस करनी है, और आपके पास पीछे जवाब आता है 10.1. सो दिस इज P, और P से आपने F की डायरेक्शन में जो ये लाइन जा रही है, यहां पर आपने 10.1 पे निशान लगाना है, जस्ट लाइक दिस. नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड Q. So we have our Q point. नेक्स्ट फेज में उसने आपको कहा था कि K से F की तरफ आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम K टू F, और K टू F आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एंड ही इज आस्किंग यू टू मेजर दिस लाइन. वंस आई मेजर इट, तो आपके पास वैल्यू आती है 20.1 सेंटीमीटर. इसी तरीके से वो आपको कह रहा है ड्रॉ द डार्ट लेग फ्रॉम K थ्रू Q इक्वल्स टू K to F एंड लेबल R. यानी कि जितना इसका साइज है फ्रॉम K to F दैट इज 20.1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से आपने 20.1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है जो कि Q को टच करते हुए आगे निकल जाएगी. 20.1 आपका आ रहा है यहां पर. सो दिस पॉइंट इज योर Q पॉइंट एंड दिस न्यू पॉइंट इज योर R पॉइंट. Dart points. Center a point 5/8 of an inch from the bust point. Redraw dart legs from from this point to F and R.
Now it's a very simple thing basically. किताब में ये स्टेप नहीं हुआ हुआ, लेकिन आई ऑलवेज टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स. तो आप कर क्या सकते हैं कि आर पॉइंट और एफ पॉइंट का आप एक सेंटर पॉइंट लें. नाउ दिस इज माय सेंटर कमिंग ओवर हियर. ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया आर और एफ का. और फिर मैंने करना क्या है, एफ और इस पॉइंट को टच करते हुए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस. ठीक है. नाउ दिस हाफ एरिया एंड दिस हाफ एरिया इज इक्वली प्रोपोर्शनेट. यहाँ पे इसको मैंने इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया है. एंड नाउ ही इज आस्किंग यू टू कम 5/8 ऑफ एन इंच डाउनवर्ड्स. ठीक है जी, 5/8 ऑफ एन इंच डाउनवर्ड्स. तो 5/8 ऑफ एन इंच को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू कम्स इज 1.6 सेंटीमीटर. यहां से आपने नीचे 1.6 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है. And from this point you are to make your new dart legs all the way till F, and from this point you are to make another dart leg all the way till R point. ठीक है जी. So you have this and this, these are your new dart legs. ठीक हो गया जी. अब आपका पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. What is your next phase? Now we will be using this tool. This is called as the French curve. ठीक है. फ्रेंच कर्व के अंदर जो है हम बेसिकली, अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ये बेसिकली कर्व, जहाँ पे आपके बॉडी के कर्व एरियाज बन रहे होते हैं वहां पे आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ योर लाइंस. फ्रेंच कर्व के अंदर हम जो है बेसिकली सिर्फ यही साइड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस्तेमाल करेंगे. फ्रॉम दिस कॉर्नर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. It's coming like this all the way over and going round all the way till this edge that you see over here. इसके अंदर की जो लाइंस हैं ये भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, डिपेंड करता है कितना कर्व है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग दिस आउटर एज दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू. तो जैसे जैसे ये कर्व यहाँ से आ रहा है, ये कर्व का साइज जो है कम है. यहाँ से जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा तो कर्व का साइज बढ़ता जाएगा. तो ये कर्व एरिया जो है हम इस्तेमाल करेंगे अपने पैटर्न अचीव करने के लिए. कहाँ पर वो मैं आपको अभी बताता हूँ. लेट्स कम बैक ओवर हियर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ही इज आस्किंग यू टू मेक अ कर्व लाइन फ्रॉम B to F and from P to R. Now what you're going to do is, let's make the B to F line first. आपने अपने फ्रेंच कर्व की ये जो पॉइंटेड साइड है ये इस डायरेक्शन में रखनी है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज जस्ट मेक अ स्मूथ कर्व फ्रॉम B ऑल द वे टिल द F. ठीक हो गया. इसी तरीके से अब आपने R to P वाली लाइन बनानी है. इन ऑर्डर टू मेक दिस ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने फ्रेंच कर्व को हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देना है. ठीक है. You just have to flip it horizontal like this, and you are to make your curved line from R to P like this. So you have your curved line over here and you have a curved line over here. Next, let's make our armhole. Now O point के ऊपर उसने एक 90 डिग्री का एंगल लिया है जिसमें रेफरेंस लाइन उसने ये रखी है. लेकिन my personal suggestion is that there is a mistake in the book. You are supposed to take the 90 degree angle on O and this line should be your reference line. तो आपने करना क्या है, अपने स्केल को ऐसे रखना है and make a reference line just like this. तो आपने ये reference line बना दी. Now ये reference line basically आपको help out करती है in a lot of ways. Now he's asking you to make a curve with the help of a French curve from G, M and O. So what you're going to do is first इसमें एक चीज का ख्याल ये रखना है कि ये जो कर्व लाइन है ये इस लाइन से इनवर्ड नहीं जानी चाहिए आपका कर्व. तो मैं अपनी पेंसिल जी पॉइंट पे रख रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू मेक माय फ्रेंच कर्व कम डाउन लाइक दिस so that it touches your M point, and I'm going to make this curved line like this. Alright, I've made a curved line from G to M.
In the next phase, I'm just going to keep rotating this French curve in such a way कि यहाँ से M और ये लाइन मेरी एक स्मूथ कर्व के अकॉर्डिंगली बन जाए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी। So I have a smooth curve coming like this over here and it's joining with my reference line. ठीक है जी। So this is how you're supposed to make your armhole over here. Now we are left with only one last step. In your last step he is asking you to वो आपको बोल रहा है कि आई पॉइंट और इस पॉइंट का आपने सेंटर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट मैंने निशान लगा लिया। इस सेंटर पॉइंट से आपने इस डायरेक्शन में 0.3 सेंटीमीटर यानी कि 90 डिग्री का एंगल लेते हुए 0.3 सेंटीमीटर आपने इनवर्ट जाना है लाइक दिस, और आपने यहाँ पे इसका एक निशान लगा देना है। नाउ ही इज आस्किंग यू टू टेक योर फ्रेंच कर्व लाइक दिस। आपने इस फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और आपने डी, इस पॉइंट और आई को एक स्मूथ कर्व में ड्रॉ कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। Now your front pattern is ready. ऑलराइट जी, आपका फ्रंट का पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट का पैटर्न जो है वो पूरा मुकम्मल हो गया है। आपने करना ये है कि यू हैव टू टेक अ रेड और अ ब्लू पेंसिल, कलर पेंसिल ले लें, और आपने जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपने इनको सर्कल कर लेना है ऐसे। जैसे डी पॉइंट हो गया, then we have our I point, then we have our G point, then we have our O point। आप M को भी कर लें सर्कल, then you're going to go all the way till the P point। next is R point, K point। के से नीचे वाला जो पॉइंट है इसका कोई नाम नहीं है, इसको भी आप सर्कल कर लें। ये सेंटर पॉइंट, इसका भी कोई नाम नहीं है। योर एफ पॉइंट, प्लीज़ ख्याल रखिएगा एफ पॉइंट ये नीचे है, इट्स नॉट दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ योर एफ पॉइंट दैट यू सी ओवर हेयर। एंड फाइनली बी पॉइंट। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये आपने ऐसे ब्लू या रेड कलर पेंसिल से आपने इसको ऐसे सर्कल कर लेना है अपने पैटर्न के ऊपर। ऑलराइट जी, वंस कंप्लीटिंग योर फ्रंट पैटर्न, जब आपका यहाँ तक सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है जहाँ पे बैक बॉडी ड्राफ्ट मेंशन्ड है। इस सफ़े पे और नेक्स्ट पेज पे आपने जिस तरीके से फ्रंट के लिए तमाम वैल्यूज़, ये जितने ब्लैंक्स हैं आपने यहाँ पे सारे ब्लैंक्स फिलअप किए थे, इन तमाम ब्लैंक्स को आपने फिलअप करना है। फिलअप करके यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर बैक पैटर्न योरसेल्फ। तो बैक का जो पैटर्न है वो आपने ख़ुद अटेम्प्ट करना है, एंड वंस यू मेक दैट यू हैव टू शो इट टू मी। थैंक यू।